Why did the young seagull stay alone on the ledge? He was afraid to fly. His siblings had already flown away a day before. It was such a long way down and he felt his wings would never support him. नौजवान बगले किनारे पर अकेला क्यों रहा? वो उड़ने से डरता था। इसके बहन भाई एक दिन पहले ही उड़ गए थे। ये इतना लंबा रास्ता था और उसे लगा कि इसके पर कभी इसका साथ नहीं देंगे। What made the seagull hesitant to fly from the ledge? He feared that his wings wouldn't support him, and the height over the sea was frightening. बगले को किनारों से उड़ने में क्यों हिचकिचाहट हुई? इसे डर था कि इसके पर इसका साथ नहीं देंगे और समंदर से ऊंचाई भी खौफनाक थी। What did the seagull feel about the great expanse of sea below? He thought it was too far down, which made him certain that his wings wouldn't hold him up. So he bent his head and ran back to the little hole under the ledge where he slept at night. सेगल ने नीचे समंदर के अजीम फैलाव के बारे में क्या महसूस किया? इसने सोचा कि ये बहुत नीचे है, जिसने उसे यकीन दिलाया कि इसके पंख उसे नहीं पकड़ेंगे। चुनाचे उसने अपना सर झुका लिया और वापस दौड़कर किनारे के नीचे इस छोटे से सुराख की तरफ गया जहां वो रात को सोता था। How did the seagull react when he tried to fly? He had been afraid to fly. Somehow when he tried to fly, he was sure his wings would not support him and the height over the sea frightening. So, he ran back to the safety of his sleeping spot under the ledge. जब बगले ने उड़ने की कोशिश की तो उसने क्या रद्दअमल जाहिर किया? वो उड़ने से डरता था। किसी तरह जब उसने उड़ने की कोशिश की तो उसे यकीन था कि इसके पर इसका साथ नहीं और समंदर की ऊंचाई इसे खौफजदा कर रही थी। लिहाजा वो वापस किनारे के नीचे अपने सोने की जगह की हिफाजत में दौड़ा। What did the seagull's parents threaten him with if he didn't fly? Answer: They threatened to let him starve on the ledge if he didn't fly away. बगले के वालिदैन ने उसे क्या धमकी दी थी कि अगर वो ना उड़ा तो? इन्होंने धमकी दी कि अगर वो उड़ा नहीं तो वो उसे किनारे पर भूखा मरने छोड़ देंगे। और पूरी सुबह वो उसे इसकी बुज़दिली का तना देते रहे। What did the young seagull witness his siblings doing the day before? He saw them being taught by their parents how to fly and catch fish. His older brother caught his first herring and they learned how to skim the waves. नौजवान सेगल ने एक दिन पहले अपने बहन भाइयों को क्या करते देखा। इसने देखा कि इन्हें उनके वालिदैन ने उड़ना और मछलियां पकड़ना सिखाया। इसके बड़े भाई ने अपनी पहली हिरनक पकड़ी और इन्होंने लहरों पर उड़ना सीखा। What was the seagull's eating situation now? There was no food left, except for a dried mackerel's tail. He had searched everywhere, including the straw nest. He even gnawed at the dried pieces of his egg's shell. It was like eating part of himself. बगले के खाने का अब क्या हाल था? कोई खाना नहीं बचा था, सिवाय एक सूखे मैक्रियल की दम के। इसने भौसे के घोंसले समेत हर जगह तलाश किया था। यहाँ तक कि इसने अपने अंडे के छिलके के सूखे टुकड़ों को भी काटा। ये खुद का कुछ हिस्सा खाने के जैसे था। How did the seagull feel due to hunger? There was no food left. He had searched everywhere. When the sun warmed the ledge, he felt more exposed to it because he hadn't eaten since the previous night. बगले को भूख की वजह से कैसा लगा? कोई खाना नहीं बचा था। इसने हर जगह तलाश किया था। जब सूरज ने किनारे को गर्म किया तो उसे इससे ज्यादा कमजोरी महसूस हुई क्योंकि इसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। What was the seagull's color and what was he trying to do on the ledge? The seagull was gray, blending with the color of the cliff. He was trying to reach his parents without flying. बगले का रंग क्या था और वो किनारे पर क्या करने की कोशिश कर रहा था? बगल भूरी रंग का था, जो चट्टान के रंग के जैसा था। वो परवाज़ किए बगैर अपने वालिदैन तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। What stopped the seagull from reaching his parents on the ledge? The ledge ended in sheer drops on both sides, with a deep chasm separating him from his parents. बगले को अपने वालिदैन तक पहुंचने से किस चीज ने रोका? किनारे के दोनों तरफ खड़ी चट्टान थी, एक गहरी खाई ने उसे अपने वालिदैन से जुदा कर दिया। What was above the seagull as he stood on the brink of the ledge? Above him, he saw a sheer precipice, possibly higher than the sea below. सेगल के ऊपर क्या था जब वो किनारे के दहाने पर खड़ा था? उसके ऊपर उसने एक खड़ी चट्टान देखी, जो मुमकिना तौर पर नीचे के समंदर से ऊंची थी। How did the seagull try to get his parents' attention? He pretended to fall asleep by standing on one leg, closing one eye, then the other. बगले ने अपने वालिदैन की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कैसे की? उसने एक टांग पर खड़ा होकर, एक आंख बंद करके, फिर दूसरी आंख बंद करके सोने का ड्रामा किया।
Who among his family was observing the seagull? Only his mother was watching him while others were dozing or preening. इसके खानदान में से कौन सेगल को देख रहा था? सिर्फ उसकी माँ इसे देख रही थी जबकि दूसरे सो रहे थे या अपने पर साफ कर रहे थे. What was the mother seagull doing while the seagull asked for food? She was tearing at a piece of fish and scraping her beak on the rock. बगले ने खाना मांगा तो माँ क्या कर रही थी? वो मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी और अपनी चोंच चट्टान पर खर्च रही थी. How did the seagull try to request food from his mother? He repeatedly called out to his mother, asking for food. बगले ने अपनी माँ से खाना मांगने की कोशिश कैसे की? वो बार-बार अपनी माँ को पुकारता, खाना मांगता. How did the mother initially respond to the seagull's requests for food? Initially, she mocked him with a derisive scream but eventually picked up a piece of fish and flew towards him. माँ ने शुरू में खाने के लिए बगले की दरखास्तों का किया जवाब दिया. शुरू में उसने एक तंजिया चीफ के साथ उसका मजाक उड़ाया लेकिन आखिरकार वो मछली का टुकड़ा उठाकर उसकी तरफ उड़ गई. What happened as the mother brought the fish close to the seagull? His mother flew upwards as he dived towards the fish, causing him to fall off the ledge. माँ मछली को बगले के करीब ले आई तो क्या हवा? जब उसने मछली की तरफ गोता लगाया तो उसकी माँ ऊपर की तरफ उड़ गई, जिसकी वजह से वो किनारे से गिर गया. What did the seagull experience as he fell from the ledge? He felt a moment of terror and silence as his heart skipped a beat, but it was over in an instant. किनारे से गिरते ही बगले को क्या तजुर्बा हुआ? इसने दहशत और खामोशी का एक लम्हा महसूस किया क्योंकि इसके दिल ने एक धड़कन छोड़ दी थी, लेकिन ये एक ही लम्हे में खत्म हो गया था. What did the seagull feel the next moment after spreading his wings? He felt the wind against his feathers and realized he was soaring gradually downwards and outwards, not falling headlong. बगले ने अपने पर फैलाने के बाद अगले ही लम्हे क्या महसूस किया? उसने अपने परों पर हवा को महसूस किया और महसूस किया कि वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे और बाहर की तरफ बढ़ रहा है, सर के बल नहीं गिर रहा है. Seagull feel after spreading his wings and starting to fly. He felt a bit dizzy but was no longer afraid. He flapped his wings once and soared upwards, then flapped again, soaring even higher. बगले को अपने पर फैलाने और उड़ने के बाद कैसा महसूस हुआ? इसे थोड़ा चक्कर आ रहा था लेकिन अब वो खौफजदा नहीं था. उसने एक बार अपने परों को फड़फड़ाकर ऊपर की तरफ बढ़ाया, फिर दोबारा फड़फड़ाकर इससे भी ऊंचा हुआ. What were the seagull's family members doing while he flew for the first time? His mother flew past him with loud wing noises, followed by his father. They were screaming, praising him, and offering him scraps of dogfish. सेगल के खानदान के अफराद क्या कर रहे थे जब उसने पहली बार परवाज की? उसकी माँ तेज आवाज के साथ इसके पास से गुजरी, इसके बाद उसका बाप. वो चीख रहे थे, इसकी तारीफ कर रहे थे, और उसे डॉगफिश के टुकड़े पेश कर रहे थे. What did the seagull start doing after realizing he could fly? He forgot he hadn't always been able to fly and started diving, soaring, and shrieking shrilly. बगले ने जब महसूस किया कि वो उड़ सकता है तो वो क्या करने लगा? वो भूल गया कि वो हमेशा उड़ने के काबिल नहीं रहा था और उसने गोताखोरी शुरू कर दी, ऊंची ऊंची और तेज चीखें मारी. What did the seagull see as he flew near the sea? He saw a vast green sea with moving ridges underneath him. समंदर के करीब उड़ते हुए बगले ने क्या देखा? उसने एक वसी सब्ज समंदर देखा जिसके नीचे चलती हुई पहाड़ियां थी. How did the seagull react to the sight of the ocean? He turned his beak sideways and crowed amusedly. सेगल ने समंदर को देखकर क्या रद्दअमल जाहिर किया? इसने अपनी चोंच एक तरफ मोड़ दी और मजे से बांध दी.